Dear students, I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in Banwari Lal Jindal Soiwala College, Tosham, District Bhiwani, Haryana. Today I will deliver lecture on dynamics for the students of BA/BSc third year, 6th semester. In dynamics, I will cover the topic projectile. Next lecture, its examples from the top of a cliff, 29.4 meter high. This is the figure of this question, this example projectile. Cliff is along AY and 29.4 meter per height. This is OX, 29.4 meter. Take along OY, on y-axis 29.4 meter. A stone is thrown, वहाँ से हमने स्टोन फेंका क्लिप से, so that it starts with a velocity of 49 meter per second and at an angle of 30 degree with the horizontal. Find where it strikes the ground at the bottom of the cliff. With 30 degree angle with a velocity क्या 49 meter per second and at an angle of 30 degree. 30 डिग्री से 49 मीटर पर सेकेंड एंगल से फेंका है. फाइंड क्या करना, फाइंड वेयर इट स्ट्राइक द ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ. क्लिफ के बॉटम पे कहाँ ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी. सोल्यूशन, लेट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ टॉप ऑफ द क्लिफ ओ एक्स ओ वाई be taken as origin and B be the point where the stone strikes the ground. Therefore, ordinate of B is minus is 29.4. Ordinate of B is 29.4. Therefore, equation of motion is y equal to, this is the equation of motion of projectile, y equal to u sin alpha formula into t minus half gt square. So this is minus because below y axis y is negative, minus 29.4. The minus 29.4, this is below y axis, y is negative, minus 29.4 is equal to 49 sin 30 degree t minus half into 9.8 into t square minus 20. After putting sin 30 degree is 1 by 2. After simplification, this becomes a quadratic. Minus 4 minus 29.4 equal to 24.5 minus 4.9 t square, or t square minus 5t minus 6 equal to 0 implies t plus 1 into t minus 6 equal to 0. Therefore, t equal to 6 seconds, rejecting negative sign, negative time. नेगेटिव टाइम हो नहीं सकता, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया है. Since throughout the motion the horizontal velocity remains the same, required distance equal to distance traveled in 6 seconds with horizontal velocity is equal to u cos alpha into t equal to 49 cos 30 degree cross 60 is equal to 49 cross under root 3 by 2 cross 6 equal to 147 under root 3 m. 49 into under root 3 by 2 cross 6 equal to 147 under root 3 m. Prove that if the time of flight of a
bullet over a horizontal range r is t seconds, the inclination of the direction of projection to the horizontal is tangent inverse gt square by 2r. Time of flight of a bullet over a horizontal range r is capital T seconds. The प्रोव करना है the inclination of direction of projection to the horizontal is this. Solution: let alpha be the angle of projection, then with usual notations we have r range is 2u square sin alpha cos alpha over g, and time of flight t 2u sin alpha over g. Therefore t square by r division of this is equal to 4 u square sin square alpha by g square cross g बटे 2u square sin alpha cos alpha is equal to 2 by g into tangent alpha. Therefore tangent alpha equal to gt square by 2r implies alpha equal to tan inverse gt square by 2r, in which we want to find out. Example 5: how must a ball be projected from a height of 4 feet so as just to clear a ball 13 feet high, distant 15 feet in a horizontal direction, and a ditch 5 feet. ditch mean a खाई. कहता है हाउ मस्ट ए बॉल बी प्रोजेक्टेड, एक बॉल प्रोजेक्ट करनी है, ऊपर फेंकनी है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 फीट, 4 फीट की हाइट से हैं, सो एज जस्ट टू क्लियर ए बॉल, और उसने 13 फुट हाई बॉल है उसको क्लियर करना, हमने बॉल को प्रोजेक्ट करना है फ्रॉम ए हाइट 4 फीट की हाइट से प्रोजेक्ट करना है, और उसने बॉल ने 13 फीट ऊंची बॉल को क्रॉस करना है, डिस्टेंट 15 फीट इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. जो बॉल प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 15 फीट दूरी पे है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड ए डिच जो खाई है 5 फीट वाइड, 5 फुट वाइड है ऑन दी अदर साइड ऑफ द वॉल, बॉल के दूसरी साइड में एक खाई है 5 फुट की. तो सॉल्यूशन है लेट ओ बी द पॉइंट, दिस इज द फिगर, ओ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 15 4 तो 15, पी की कोऑर्डिनेट 15 और 9 क्योंकि कोऑर्डिनेट 20 - 4 n. अल्फा इज द प्रोजेक्शन. O let O be the point of projection be taken as the origin, and the horizontal and the vertical through it as the axis. Then with the usual notation the equation of the trajectory is y equal to tangent x tangent alpha minus gx square divided by 2u square cos square alpha, y equal to x tangent alpha minus gx square divided by 2 alpha square cos square alpha. Obviously the coordinates of the point P on the wall are 15, 9 and that of point Q on the ground are 20, -4. The coordinates of the point P on the ball 15 फीट दूरी पे है, 15 फुट और 9 and that of point Q on the ground are 20 - 4. Since the point P 15, 9 lies on the trajectory P 15, 9 ट्रैजेक्टरी पे लाई करता है. Since obviously the coordinates, since the point P 15, lies on the trajectory 1, therefore putting the value in equation number 1, this 9 equal to 15 tangent alpha minus g
की वैल्यू 32 है। और एक्स क्या है 15 का होल स्क्वायर, फिर 225 बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा हमने फाउंड आउट करना। और 16 इंटू 225 2 से कट गया, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 15 टेंजेंट अल्फा माइनस 9। ऑल्सो पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट क्या है 20, -4 लाइज ऑन द ट्रेजेक्टरी फॉर 1, ट्रेजेक्टरी 1 पे लाई करता है तो -4 इक्वल टू 20 टेंजेंट अल्फा माइनस 32 गुणा 400। इस क्यू पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ट्रेजेक्टरी निकाल रहा है वाई की वैल्यू। तो -32 गुणा 400 बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और 16 इंटू 400 डिवाइड बटे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 20 टेंजेंट अल्फा प्लस 4। 16 इंटू 400 बटे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 20 टेंजेंट अल्फा प्लस 4। तो डिवाइडिंग सेकेंड बाई 3 वी हैव 9 बटे 16 इक्वल टू 15 टेंजेंट अल्फा माइनस 9, 16 20 टेंजेंट अल्फा प्लस 4 इम्प्लाइज 3/4 इक्वल टू 5 टेंजेंट अल्फा माइनस 3 बटे 5 टेंजेंट अल्फा प्लस 1 इम्प्लाइज 15 टेंजेंट अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 20 टेंजेंट अल्फा माइनस 12 इम्प्लाइज टेंजेंट अल्फा इक्वल टू 3 इक्वल टू 3 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3, hence the angle of projection is tangent inverse 3. Next example of this is, we will do again this example. How much a ball be projected from a height of 4 feet? बॉल है 4 फीट हाइट की, ठीक। सो एज जस्ट क्लियर ए बॉल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 फीट, 4 फीट हाइट से हमने बॉल को प्रोजेक्ट करना है। सो एज जस्ट टू क्लियर ए बॉल 13 फीट की हाइट की बॉल को क्लियर कर दे, डिस्टेंट 15 फुट पे है ये, इन ए हॉरिजेंटल डायरेक्शन एंड ए डिच, डिच क्या है जो खाई है 5 फीट वाइड है ऑन दी अदर साइड ऑफ द बॉल, ये है। हाउ मस्ट ए बॉल बी प्रोजेक्टेड, मैंने एंगल निकालना, हाउ मस्ट ए बॉल बी प्रोजेक्टेड, एंगल निकालना हमें। लेट ओ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बी टेकन as origin and horizontal as the vertical, horizontal as the vertical through it as the axis. ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन ले लो एंड हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल थ्रू इट एज एक्सिस, हॉरिजेंटल और वर्टिकल को ओ जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लिया है उसमें एक्स हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल वाई एक्सिस। देन विद यूजुअल नोटेशन द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन इज y इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर, दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर प्रोजेक्टाइल, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। ऑब्वियसली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p ऑन द बॉल, p पॉइंट ऑन द बॉल, बॉल की हाइट क्या है 15 है ना, ए बॉल 13 फीट हाई, डिस्टेंट 15 फीट, 15 फीट की दूरी पे है, एक्स क्या होगा 15 हो गया। ऑब्वियसली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी ऑन द बॉल, बॉल के ऊपर है पी पॉइंट और 15,9 एंड डेट ऑफ पॉइंट क्यू ऑन दी ग्राउंड, ग्राउंड पे क्या हो गया -4 हो गया, ये -4 क्यू ओ एक्स के ऊपर है क्यू पॉइंट, -4 और 20, 5 और ऐड हो गया इसमें, 15 में 5 और ऐड हो गया तो एक्स एक्सिस
20 हो गया। और नीचे गया ये डिच है, डिच 5 फीट। बॉल है ये, बॉल PN इज बॉल फॉर एग्जांपल, 5 फीट की डिच है, ठीक है। तब इनकी वैल्यूज, y की वैल्यू 9 है, 9, y इज 9, x 15 है, टेंजेंट u अल्फ़ा में पता नहीं है किस एंगल से प्रोजेक्ट किया, माइनस g 32 होता है, x 232 फीट पर सेकंड, क्योंकि फिट में नाप रहे हैं हम, इसमें इतने फिट हाइट, तो फिट पर सेकंड में फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 32 क्रॉस x क्या 15 का होल स्क्वायर 225 टू u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, देयरफॉर 16 इंटू 225 बटे u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 15 टेंजेंट अल्फा माइनस 9। Also point Q 20 minus 4 lies on the trajectory 1, ट्रेजेक्ट्री 1 है, 20 माइनस 4, ये भी पॉइंट Q भी ट्रेजेक्ट्री पे है, इसलिए ये y इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2 u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें पुट कर दिया, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 20, ये g 32 है, 20 का होल स्क्वायर 400, 2 u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। तो ये सिंप्लीफाई किया हमने, 16 गुणा 400 u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 20 टेंजेंट अल्फा प्लस 4 एक साइड में ट्रांसफ़र कर दिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 और 1 से फ्रॉम 2 and 1 डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 by 3 we get 9/16 equal to 15 टेंजेंट अल्फा माइनस 9 बटे 20 टेंजेंट अल्फा प्लस 4 implies 3/4 क्रॉस 5 टेंजेंट अल्फा माइनस 3 बटे 5 टेंजेंट अल्फा प्लस 1, therefore implies 15 टेंजेंट अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 20 टेंजेंट अल्फा माइनस 12। तो टेंजेंट अल्फा क्या है 3, implies अल्फा इक्वल टेंजेंट इनवर्स 3, hence the angle of projection is tan inverse 3। तो dear students, we will discuss next, a body is projected horizontally upward from a height from point capital A with a given velocity u, so that direction in which another body must be projected simultaneously with velocity v from the point V is in the same horizontal line with A as to strike the first body। फर्स्ट बॉडी को दूसरी बॉडी स्ट्राइक करेगी इस एंगल पे साइन इनवर्स u by v। तो लेट आर बी दी, ये दिस इज दी आपका वो है, और लेट आर बी दी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड पॉइंट बी दी ओरिजिन अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, सो डैट बोथ पार्टिकल मीट एट पॉइंट P विच इज एट ए हाइट s हाइट पे हैं और द एक्स एक्सिस। vertically upward motion of first body is s equal to ut minus half gt square। Equation of the path of the second body is s equal to v sin alpha minus into t minus half gt square। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इसको सॉल्व करो आप, और अल्फ़ा आपका साइन इनवर्स u बाई वी आ जाएगा। तो फ्रॉम v s की वैल्यू v साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो साइन अल्फा u बाई वी इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स u बटे वी। यू विल गो ऑन, थैंक यू।